बताइए प्लीज। In this case, reply has been filed, not sir. नहीं वो तो ठीक है, बताइए ना थोड़ा सा इनका जो आर्ग्यूमेंट है क्लॉज 1.7, इसमें इनका कहना ये है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर का एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। सर ये लियन में है बेसिकली, इनकी सीनियरिटी डिस्ट्रिक्ट में ही मेंटेन तो होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब क्या होता है बताइएगा। सर ये स्पेशल पर्पस के लिए इनको शिफ्ट किया गया है। कहाँ लिखा है ये ट्रांसफर ऑर्डर? लटेरी के लिए, लटेरी में जो अभी काफी बुरा इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद में सर कहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑर्डर में स्पेशल पर्पस के लिए शिफ्ट किया जा रहा है? ऑर्डर में तो नहीं मेंशन। वो चीजें बता दीजिए। तो फिर सरकार को टीचिंग ऑर्डर पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज ये कि ऐसा कहाँ दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर के ऑफिसर का ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट के बाहर किया जाएगा और उसका लियन मेंटेन किया जाएगा? सर ये प्रशासनिक जितने भी कहाँ है बताइए ना थोड़ा सा बताइए। कौन सी फाइल में लिखा है? फाइल लेकर आए आप जिसमें इनका ट्रांसफर डील किया गया है? नहीं सर, वो फाइल हमको शासन से नहीं मिली। नहीं भी नहीं। डायरेक्शन हमारे हैं सर। हाँ क्या डायरेक्शन से बताइए। 26 के हमने तो बुलाया नहीं था इनको। बुलाया था, कहाँ बुलाया? इसमें ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। रीडिंग फ्रॉम एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया था। नोटिस इज वेव्ड बाय इतना इतना ही मे फाइल रिप्लाई टू दिस प्ली दैट कैडर ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इज दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर and therefore a forest guard cannot be transferred outside without affecting his seniority. List on 28/2 28/2 को भी कोई ऑर्डर अच्छा। This court is not convinced with the reply how an order of transfer is made post is under this seniority will be maintained from his petition. Let clear rules and regulations be brought on record by the OIC. अब बताइए रूल्स कहाँ हैं आपके इसके बारे में? ये रूल्स हैं? रूल्स इसमें डायरेक्शंस हैं हमारे यहाँ। नहीं प्रशासनिक आधार पर जो भी करे जाएंगे, हाँ उनको सीनियरिटी जहाँ जिस जिले से वो नियुक्त पूर्व में यदि कुछ स्थानांतरण हो गए हो तथा वरिष्ठता के संबंध में विवाद हो ऐसी स्थानीय व्यवस्था द्वारा सांप्रदायिक अरे लटेरी में ऐसा ही हुआ, हमारे ही लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हो गया है। हाँ ठीक है। और काफी डिमोरलाइज स्टाफ है हमारा वहाँ पे। क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने ट्रांसफर ऑर्डर में? फाइल प्रोड्यूस कर दीजिए जिसमें ट्रांसफर, उसमें लिखा है कि आपने ये सब चीजें प्रोड्यूस दी फाइल। चेक करना पड़ेगा, शासन की फाइल है। आप शासन के नहीं है क्या? नहीं है सर। ऑफिसर इंचार्ज जब नियुक्त होता है तो उसका काम होता है कि वो शासन के पास जाए। आप किस पद पर हैं? मैं कंजर्वेटर हूँ सर, भोपाल डीएफओ। हाँ तो आपको ये बात मालूम होगी कि जब आप ओआईसी अपॉइंट होते हैं then you are supposed to approach the government, obtain the relevant papers and then approach the high court for preparation of reply. You are also supposed to get a pair-wise reply made and then approach the AG office. ये बात अलग है कि आप लोग खाली हाथ आ जाते हैं। और आप pair-wise reply बनाकर लाए थे? दिखाइए कहाँ है। इसका हमने पहले ही रिप्लाई फाइल कर चुके हैं सर। Not may I request for identical issue has been already decided by the coordinate bench of the। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने ऑर्डर विड्रॉ करने के लिए बोला, फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए बोला। आप तो इसको क्वेश ही कर देते ना। ये तो लोक अदालत का है। लिखिएगा। I'll not say anything, लिखिएगा। Petitioner is aggrieved of the transfer order annexure P1 dated 25/1/2023 in which petitioner's name appears at serial number WP number 11 where रुक जाइए मिस्टर काउंसिल, अभी आप बीच में मत बोलने की आदत डालिए। सीरियल नंबर 11। हाँ serial number 11 हाँ 11 serial number 11 whereby petitioner is transferred from General Forest Division Bhopal to General Forest Division Vidisha. Full stop. It is submitted that petitioner was working as forest guard. It is a post of district cadre. A fact which is accepted by Shri, आपका शुभ नाम बताइए। आलोक पाठक। आलोक पाठक, conservator of forest and DFO Bhopal. Full stop. Next pair. It is submitted by Shri Pathak that under extraordinary circumstances, petitioner has been transferred from Bhopal to Vidisha. Full stop. It is submitted that such transfer is permissible and his petitioner's lien will be maintained at Bhopal. Full stop. Next pair. In support of his contention,
petitioner, the OIC Shri Pathak has produced copy of Forest Department Circular dated 10th/9th August 1986, which reads, which deals with determination of seniority on request to transfer from one region to another. Full stop. Opening lines of the circular reads as under. ये पीला फ्लैग लगाए, लिखिएगा, वन विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के स्वेच्छा से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के स्थानांतरण के संबंध में. Thus, it is evident that the guidelines which have been issued are in relation to own request transfers and not for the administrative transfers. Full stop. OIC is trying to mislead the High Court. Full stop. He has not placed any record, there is no material on record to show that. So there column number 3 में लिखा है नंबर 3 में प्रशासनिक. हाँ लिख रहे हैं. प्रशासनिक पे लागू कहाँ होता है ये? क्या लिखा? Submit that transfer was made, but transfer of the petitioner was made on own request. Therefore, the aforesaid circular will not be applicable. Next paragraph. OIC has not brought on record any document to show that there is any provision under the rules to maintain the lien in one district and transfer the employee to another district, especially when he belongs to the district cadre. Full stop. OIC Shri Pathak also admits that he had not obtained file in which case of the petitioner was processed for transfer, giving reasons for his transfer from one district to another. Full stop. Thus, it is evident that OIC, who was duty bound to have obtained instructions and file from the state government, and as much as transfer order is issued by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department, has failed to perform his duties as an OIC. Full stop. इंस्ट्रक्शंस तो मैंने दिए इनसे. लिए होंगे. Full stop. At this stage, Shri Pathak submits that he had obtained instructions for the state government. Full stop. कहाँ है वो instructions बताइए? वर्बल इंस्ट्रक्शन यही दिए. When he is asked to show the instructions that were obtained by him, then he submits that he was given verbal instructions. किसने दिए थे verbal instructions? नाम लिखा देते हैं उनका. किसने दिए थे? This was given by additional PCCF at the administration to Mr. Mohanta. These instructions were given by additional PCCF within bracket to Shri Mohanta. Full stop. Next para. However, fact of the matter is that transfer order is issued by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh. Instructions were required to be obtained from the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, or the Principal Secretary, Government of the Madhya Pradesh, as the case may be. Additional PCCF, क्या? PCCF is not state government. He is an employee of the department. He is not the employee of the Mantralaya. He had no. Full stop. Therefore, instructions were obtained from an inappropriate authority. Full stop. OIC was required to exert and should have approached Mantralaya to look into the file in which case for transfer of the petitioner was processed. Full stop. Therefore, oral submission of Shri Alok Pathak that there was some exigency and therefore petitioner was transferred, since is not made out from the order, and the conduct and working of the state government is required to be transparent, comma, order being not transparent and having been passed in violation of the maintenance of rules of maintenance of district cadre, comma, petition is allowed impugned order as far as it relates to the petitioner request. गलत. May I make a submission, my lord? इन्होंने हमारी पेमेंट भी रिलीज नहीं किया है. ये कह रहे हैं कि कर्तव्य से अनुपस्थित है. ये नोटिस जारी कर दिया है इन्होंने. At this stage, petitioner's counsel submits that he has not been paid salary for not joining at Vidisha. Full stop. Since petitioner was granted interim protection Yes. by this court
comma, it is directed that the state authorities shall, that the department shall release his payment forthwith within 7 days from today, failing which petitioner will be free to move appropriate application for non-compliance of the orders. But liberty will be granted to file fresh order. नहीं, no liberty is required. When order, लिखिएगा, at this stage, Shri Shiv Kumar Srivastava submits that liberty be granted to pass fresh orders. Next para. Since order is illegal on face of it, no liberty can be accorded in favor of the respondents to pass fresh orders of transferring the petitioner outside the district. As far as transfer within the district is concerned, that is within the domain of the authorities and they can pass that order in accordance with the provisions of the transfer policy. चलिए, ये क्या है बताइए? In my case also, I am at item number 15 also. Connected matter है. Connected. सेम ऑर्डर पास कर दीजिएगा, इसमें आइटम नंबर 15 में इनका नाम लिख लीजिएगा. 15 में कि 19 में है? 15 में also. Item number 15 पे. P1 में. Page number 19, item number 15. प्रमोद श्रीवास्तव. इसी में ऑर्डर में 15 नंबर पे है, सेम ऑर्डर कर दीजिएगा, क्वेश्चन कर दीजिएगा. हम देखो. Period number 9.